हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने लाइव स्ट्रीम में। तो आज के इस लाइव स्ट्रीम वीडियो में हम एक फ्रंट एंड मेंटर का चैलेंज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम अपने ब्राउजर को ओपन करते हैं। ओके, देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू फ्रंट एंड mentor.io, like the official site of this. Okay, so लेट्स सी सम चैलेंज। कुछ चैलेंजेस को यहाँ पर देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम फ्रंट एंड मेंटर का मतलब बहुत सारे ऐसा साइट है जहाँ पर आप अपने HTML CSS या कोडिंग से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट भी आप बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस रेगुलर अपडेट होते रहते हैं। तो आप यहाँ से कोई भी एक चैलेंज ले सकते हैं और उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको कंप्लीट करके। तो आज के इस वीडियो में हम एक चैलेंज ये लेंगे। ठीक है, सबसे पहले फिल्टर करते हैं। तो सी लाइक मुझे कुछ ऐसा चैलेंज है जिसमें बेसिकली एपीआई का यूज हो, लाइक HTML CSS तो जावास्क्रिप्ट कोई इसमें यूज हो, साथ में एपीआई का यूज। तो मैं इसे फिल्टर बाय एपीआई करता हूँ क्योंकि एज यू कैन सी मैंने पहले बहुत सारे चैलेंजेस कंप्लीट किए हुए, लाइक दिस एडवांस जनरेटर ऐप, ये मैंने पहले कंप्लीट कर लिया है। एंड दिस इज द प्रीमियम वन, लाइक मैं प्रीमियम यूजर नहीं हूँ अभी के लिए। सो अभी के लिए फ्री ही चूज करूँगा, लाइक दिस आईपी एड्रेस ट्रैकर। इसका भी वीडियो आपको मेरे वेबसाइट पर मिल, सॉरी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो मैंने इसे भी कंप्लीट किया हुआ है। ओके, लेट्स सी। ओके, URL shortening API landing page and the rest country API with color। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम द रेस्ट कंट्रीज API विद कलर थीम फीचर, ओके, इस चैलेंज को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो इसको ओपन करते हैं। Okay, so here you can see the brief description. Okay, your challenge is interacting with the REST country API to pull country data and display it like a design, like in Belgium. Okay, you can use any JavaScript framework or library on the front end, such as React or Vue. Okay, you also have complete control over the packages you to make the HTTP request or install on your creative. So सबसे पहले हम इस चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें इस बटन पर क्लिक करिए, स्टार्ट चैलेंज बटन। ओके, सो डाउनलोड स्टार्टर कोड, डाउनलोड करते हैं कोड को। डाउनलोड ऑफ फिग्मा डिजाइन, तो बट इसके लिए मुझे प्रो मेंबर होना पड़ेगा, तो मैं अभी के लिए फ्री मेंबर से काम कराता हूँ। स्टार्टर कोड, ओके, देन रीड द रेडमी फाइल एंड देन डिजाइन। ओके, use whatever tools you like and then start it. Okay, start and you can also see my project, like starter code is also downloaded. Okay, तो मैं उसको open कर लेता हूँ। Okay, so let me open it inside the VS Code editor, tool editor। तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ। It's not from the option, I think so it's in the zip file। yes, पहले मुझे इसे unzip करना है। so extract, sorry, extract, extract, sorry। ओपन करते हैं इसको। नाउ इस पर राइट क्लिक करता हूँ, शो मोर ऑप्शन एंड ओपन विथ कोड। Okay, let's see the readme file first। So I'm gonna preview it। So right click, open preview, let's just start। Okay,
So welcome, thanks for checking out for this front-end coding challenge. With the challenge, your challenge is to integrate with this REST countries API. Yes, right click, control click. Okay, it will take this REST countries data. Okay, so this is the API where you can I can get all countries details. Okay, REST country you can access API through, but in order to get the faster response, you should filter the response by the field you need. Yes, like by field, okay, endpoints. So let's try this first. So, and see if I get the response. Control C, control C, and then okay. So जैसा भी होता है मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है तो मुझे बेसिकली इस एपीआई का यूज करके अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है. ओके, और रीड करते हैं. You can use any JavaScript framework or library on the front end, such as React or Vue. तो मतलब हम कोई भी एक फ्रंट एंड लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं. Okay, you have also you also have complete control over which package you use to do things like make an HTTP request or style your project. Okay, and your user should able to see all countries from the API to on the home page. Okay, home page पर सभी countries दिखना चाहिए. सर्च फॉर ए कंट्रीज यूजिंग इनपुट फील्ड. ओके, एक इनपुट बॉक्स दिखाना है यहाँ पर, उससे यूजर आप कंट्रीज को सर्च कर सकते हैं. फिल्टर कंट्रीज बाय रीजन and click on a country to see more detailed information. Okay, click through the border countries on the detail page. Okay, and toggle the color scheme between the lights and dark. Okay, so this is uh, here are the design. Okay, यदि आप डिजाइन रखना चाहते हैं तो देख सकते हैं. This is, I think this is the country detail page. Yeah, this is for country detail page. There's the country's flag and there are country details like native name, population, region, sub-region, capital, and top level domain. Okay, and the currencies and language and the border also. Here is the back button. And this is the, I think, header and that toggle button. Let's see. Okay, in the light mode, something. Okay, so this is the home page. I think, yeah, I need to design like this. Here you can see all country detail like country flag and some information about the country. Okay, so yeah, it's programming. So White is an framework. Like I can explain it. Like if I go to Google and search for White, okay, it's like a framework just and it's allow you to create a application using multiple templates like React and Vue. So मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बताता हूँ, एक ओवरव्यू दे देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आएगा बढ़िया से. ओके, यदि आप नए हैं सो वाइट क्या है, ये फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है. ये फ्रेमवर्क क्या होता है, जो आप मतलब सीएसएस एचटीएमएल और सीएसएस का यूज करके आपको एक वेब पेज डिजाइन करने में मदद करता है वो. तो इंस्टेड आप लाइक एचटीएमएल, यदि आप एचटीएमएल और सीएसएस जावास्क्रिप्ट से कोड पेज बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है, लेकिन फ्रेमवर्क बहुत सारे यूटिल्स और प्लगइन्स का यूज करके आपको एक वेब पेज डिजाइन करने में मदद करता है. तो वाइट एक तरह से फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से आप वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सो like if I click on get started, so here you can see the overview of the page. Okay, what is white और इसे क्यों यूज करना चाहिए. ओके, सो मैं बेसिकली वाइट का यूज इसलिए करता हूँ क्योंकि एक लाइट वेट होता है, लाइट वेट एप्लीकेशन होता है और ये बहुत सारे टेम्पलेट्स को यूज करने की लाइक इसकी मदद से बहुत सारे टेम्पलेट को यूज की मदद से वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं. लाइक यू कैन सी we can use the vanilla JS also, Vue.js, React, okay, different framework we can use. Okay, so I will go through the like how we can create an
Vite application. Okay. So first of all, I think the challenges is pretty much clear here. Like हमें आज के इस प्रोजेक्ट में क्या क्रिएट करना है और कैसे क्रिएट करना है वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन क्या क्रिएट करना है वो आई थिंक क्लियर हो चुका है। ये अभी कोई डाउट होगा आपको तो कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। ओके, सो इट्स डन। लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट। तो मैंने पहले से ही अपना VS कोड एडिटर ओपन किया हुआ है। ओके, तो आई विल गो टू अ फोल्डर लोकेशन। तो मैं ओपन फोल्डर पर क्लिक करता हूँ। ओके, go to desktop and then select project. Okay, here I will create one more project like a new folder. And name will be test country JPA. Okay, and I'll click on select folder. Okay, so मैंने प्रोजेक्ट को मतलब जो फोल्डर मैंने किया था उसको VS कोड एडिटर फोल्डर से ओपन कर दिया है। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू escape folder और like project। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? There, if you have Node.js installed in your application like system, you can do the following thing। Okay, तो सबसे पहले क्या करना होगा? लाइक हमें इस कमांड को अपने टर्मिनल पर रन करना होगा। लाइक npm create byte @latest। ओके, तो हम इसे कॉपी करते हैं। ओके, अब हम टर्मिनल को ओपन करें। टर्मिनल को ओपन करने का लाइक बहुत सारे मेथड है। लाइक मेजरली टू ट्री मेथड है, VS कोड एडिटर में। लाइक आप यहाँ मेन्यू बार से terminal then new terminal सभी ओपन कर लेते हैं। either you can if you go with shortcut like control plus tilde tick, like जो टैब बटन के ऊपर होता है उसकी मदद से, और कंट्रोल प्लस J, थ्री वे है। आप किसी भी एक वे से टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं। so let's get until it's get open। okay, so the टर्मिनल ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर हम अपने कमांड को लिखते हैं लाइक npm create byte। ओके, एंड देन हमें यहाँ पर लाइक अपने डायरेक्टरी का नेम स्पेसिफाई करना था, क्योंकि मैं अपने रूट डायरेक्टरी में हूँ इसलिए मैं सिर्फ डॉट प्रेस करूँगा एंड इंटर बटन प्रेस। आई विल प्रेस इंटर बटन। ओके, so now we have to select the template, so I will select the React। okay, and then you need to select the language like select the variant। तो किस वेरिएंट के थ्रू आप अपने एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, whether it's going with TypeScript or JavaScript। So for this project I will go with JavaScript only, so I will select JavaScript, and now you can see like scaffolding project is done। Okay, now like this is suggesting me two command, like first one is npm install and then second one is npm runtime। so like npm install what it will do, यह जो भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी है आपके प्रोजेक्ट को रन करने के लिए उसे इंस्टॉल करेगा, एंड देन npm रन जैसे आप अपने एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट आई नीड टू डू npm install, wait until it get installed। and one more thing, uh, I just want to let you know like यदि आपने अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। मैंने लाइक एक what you can, I have a subscription goal also, like you can see on the top right hand side, you will find a subscription goal like it's showing something around 363। okay, so like my goal is to complete this to till 500 till 15th of December। okay, so I have just a small request to all of you guys, whoever। तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, so that मैं अपने चैलेंज को कंप्लीट कर सकूँ। ओके, तो चलिए आज तब तक के लिए हम आज का फ्रंट एंड मेंटर के चैलेंज को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सो लाइक इट्स इंस्टॉलिंग द डिपेंडेंसीज फॉर मी।
Wait until it got installed. So as you can see, it's installed the dependency. Okay, like you can see, like added 269 packages. Okay, and the 97 packages are looking for funding. These are the information. Okay, so it's done. Now अब हमें अपने एप्लीकेशन को रन करना है, तो रन करने के लिए हम नीचे वाले कमांड को रन करेंगे, लाइक npm run देव। ओके, सो हम पेस्ट करते हैं एंड देन इंटर बटन को प्रेस करते हैं। Okay, so now as you can see, my application is running successfully. So if I click on the right click, sorry, not right click, control plus click. Okay, if I control pressing the control button and click on this link, so it will open this page on my browser, like default browser. Okay, okay, so you can see my application is running. Okay, this is the home page of our application. Okay, and if you notice, like I have not written a single word of code detail, and it's created a beautiful like page for me. So these are the benefits of using framework. Okay. So like now what I will do, I will go to my application. Okay. And so like मतलब मुझे ये जो वाइट प्लस रिएक्ट एप्लीकेशन ये जो दिख रहा है, ये मुझे कहाँ से दिख रहा है? ओके. So like I will go to folders. Like first of all you can see the node modules. Okay. तो node modules एक डायरेक्टरी है जहाँ पर आपके सारे पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं। ओके, लाइक आपने देखा होगा, हमने सबसे पहले npm इंस्टॉल किया था। तो npm इंस्टॉल के से जितने भी सारे पैकेजेस होते हैं वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं, और वो नोड मॉड्यूल्स के डायरेक्टरी में इंस्टॉल होता है। लाइक ये यू कैन सी डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस। ओके, और ये नेसेसरी होता है आपके प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। ओके, एंड द सेकेंड वन यू कैन सी लाइक पब्लिक। तो पब्लिक एक ऐसा फोल्डर है जहाँ पर आप अपने इमेज असिस्ट, यदि आपको अपने लाइक application में कोई image use करना है, associate like you can see the icon. Okay, on the title bar you can see an icon like below, beside is Vite plus React. तो ये कहाँ से आते हैं? ये सब आपके पब्लिक इमेज स्टोर होता है। लाइक इफ यू गो टू here, I will see a svg file which is nothing but your logo. Okay, so I hope it's clear what is node modules and public folder. Now let's the third directory is src. ओके, सो लाइक यह एक मेन डायरेक्टरी होता है जहाँ पर आपके सारे मेन लॉजिक या कोड स्टोर होते हैं। ओके, आप आपके एप्लीकेशन के लिए जिससे वर्क रन होता है। सबसे पहले इसमें सबसे मेन फाइल होता है मेन डॉट जेएसएक्स। ओके, तो आई विल लेट यू नो व्हाट इज टू। ओके, सबसे पहले ये ये जैसा कर सकते हैं, ये एक रिएक्ट मतलब सॉरी रिएक्ट लाइब्रेरी को इंस्टॉल करता है। लाइक दिस इज द कमांड टू इंस्टॉल द रिएक्ट लाइब्रेरी, import react from react. Okay, then react dom, like react use the react dom like dom thing, so it's importing the react dom. Okay, then it's importing the app.js. App.js, like this is the file. From this file it's importing the application. Okay, I will show you like how it's getting uploaded, like installed. Okay, first
Yeah, if you notice under line number 6, okay, यदि आप line number 6 का ध्यान से लगे, so what it will do, it's using the React DOM dot create root, and then I think you have noticed it if you have read about the DOM thing like HTML, CSS, and DOM thing like document object model. So like you will notice like we can catch any element inside a Java inside a JavaScript with document dot get element by get element by ID. Okay, and where you can find this ID root. If you go like here, you can see index.html file also. Okay, okay, wait. Okay, now it's fine. So, okay, just give it a thumbs up or let me know in the comment. Or should I increase more? Okay. I think it's fine for me. Okay. I have increased a little bit, like I think it's way much bigger. Okay, now it's done. So now if I go to the index.html page ना, yeah, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज द मेन HTML पेज लाइक रिएक्ट क्या होता है एक सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है okay, जिसमें सिर्फ एक index.html पेज होता है और उसी से वो कंप्लीट एप्लीकेशन को क्रिएट करता है okay, and what it do ना it's uses this single div only okay, like single div में आपका सारा एप्लीकेशन समाया होता है so what it do ना यहाँ पर आप देख सकते हैं एक div जिसका आईडी है root okay, and I have show you inside the main.css like here is catching the this that div no? Okay, you can see document data get element by id so उस id को उसने यहाँ पर कैच किया है और उस id के थ्रू like it's using the render method to render your application and in the react if you know like react is all about the component okay, it's all about the component like if you go to app.css okay, any css file it's a component like you can say this is a components and it uses this component to render our application okay. So now what like here यहाँ आप जैसे आप देखते हैं it's imported like the app has been imported here like import app from the app.js. If you go to app.js file like this file here you can see a function has been created like function app okay, and if you go down you can see it's exported also like you can see export default app like यहाँ पर app को export भी किया. Don't worry about this code and all. I will explain. Okay. So first just notice like if यहाँ पर एक application components create हुआ है. Okay. Component क्या होता है? Like एक simple piece of JavaScript code होता है जिसका अपना ही एक सारा व्यवहार होता है. Okay. और ये लाइक यूआई को रन करने में इससे यूआई को क्रिएट करने में मदद मिलती है एक सिंपल लैंग्वेज में ओके. सो लाइक यहाँ पर मेन कंपोनेंट क्रिएट हुआ और मेन डॉट जेएसएस में यहाँ पर इंपोर्ट हुआ है और यहाँ पर हम इसे रेंडर कर रहे हैं ओके. और आपको जो ब्राउजर पर जो भी पेज दिख रहा है उसका सारा कोड एप डॉट जेएसएस में आपको दिखेंगे ओके. लाइक हियर यू कैन सी लाइक one anchor tag and then image also white logo. If I go to white logo in the white.svg here you can see this svg file जो मैंने आपको शो किया था शुरुआत में this is the file okay. and यहाँ पर एक h1 create हुआ है white plus react like you can see white plus react okay. and then एक count बटन create हुआ है जो like सिंपल काउंटर बटन क्रिएट किया गया है सेट विद द हेल्प ऑफ सेट काउंट से इंक्रीमेंट है. व्हाट इज दिस सेट काउंट like this state है like here पर यहाँ पर एक स्टेट क्रिएट किया हुआ है सेट काउंट okay, and with the help of set count function it's in getting the count okay. Like I will say if I click on this count button so it will get included like you can see. And how it's getting increment like यहाँ पर एक state create हुआ use state and what is this use state. So if I hover it like it can see it return a stateful value and a function to update it
यह एक स्टेट को स्टेट क्या होता है, एक वेरिएबल जैसा आप मान सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में कोई भी हम वैल्यू क्रिएट करते हैं विद हेल्प ऑफ वेरिएबल, तो यहाँ पर भी जैसा हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो इसको हम स्टेट के नाम से जानते हैं। सो लाइक वी कैन क्रिएट अ स्टेट विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट, और ये दो वैल्यू को रिटर्न करता है, लाइक एक तो स्टेट वेरिएबल, okay, which is the set count. Okay, and in the callback function we can manipulate this variable. Like you can say whenever in the button on-click event, एक on-click event लगाया गया है, okay, and then inside the callback function it's what is doing set count and the previous count, like here in the count it will take the previous count value, and then what is doing it's updating with plus one number. So now whenever I click on this button, it will get updated. So now if I click on again, it will get updated. So I hope you have understand this app.json file also. Okay, and CSS and these are responsible for creating the style application. Okay, so it's done, and yes, link just you can see it's just a utility. So one second. Hmm. Okay. And what is this? Yes, link. So yes, let it just a file to like it will show you some warning and that to detect your like any type of error if you have in your code also. Okay, get ignore, it will ignore the all necessary file while pushing your code onto the GitHub. Okay, like यदि जैसे कि you can see यदि मैं इस प्रोजेक्ट कोड को GitHub पर पुश करना चाहता हूँ और मैं वो चाहता हूँ कि लाइक नोड मॉड्यूल्स, ओके, या वट एवर फाइल जो मैं चाहता हूँ कि गिटहब पर पुश ना हो, तो मैं उस फाइल के नेम को यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ जिससे कि वो गिटहब पर पुश नहीं होगा। ओके, इंडेक्स आर्टिस्ट आई ऑलरेडी शो यू पैकेज लॉक एंड पैकेज जैसा सॉरी पैकेज जेसन फाइल, ये आपके सारे डिपेंडेंसी और को दिखाता है, एंड स्क्रिप्ट फाइल यहाँ पर होती है जो आपके कोड को रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, यू कैन सी ना आई हैव रन दिस कोड and to run there. So it will responsible for run this your project. Okay, and here you can see all the different dependencies like packages, what's required for to run your code, and then the readme file and config file, configuration file. So I hope everything you guys understood. Okay, so now let's start to create our project. So first of all मैं क्या करूँगा, अपने application like app.js file को clean up करूँगा. So I don't need this thing. Okay, so I will remove it. So I don't need the like use state for now. So I will also remove it, and I will delete all this code. Okay. Okay. And I will write a simple h1 tag. Okay. And hello world. Okay. Save it. And now if I go to my application, you can see only hello world is from here. Okay. All the thing has been called. Okay. So first of all, what I will do. ओके, सबसे पहले हम लाइक डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करते हैं जो अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए लाइक जरूरत है। सबसे पहले हम यूज मतलब इंस्टॉल करेंगे मटेरियल यूआई। तो व्हाट इज दिस मटेरियल यूआई नाउ? ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज दिस न्यू थिंग कम्स अप। सो बाय द वे गाइस, आई एम अगेन रिमाइंडरिंग यू, लाइक जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू ट्राई टू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो। Now come to this here. Like what is this material? So material UI is a beautiful by design and feature a suite customization option to make it easy to implement your custom design system. Like material UI इसको समझ सकते हैं लाइक एक CSS लाइब्रेरी है, एक UI लाइब्रेरी जो आपको एप्लीकेशन को डिजाइनिंग में हेल्प करती है। लाइक इफ यू वांट टू मेक अ बटन, लाइक ना,
simple button or this type of effect. No? So if you try to make it like using CSS or JavaScript, okay, it will be more complex to do it for you. But Material UI और Tailwind UI this type of UI library यह आपको हेल्प करती है डिजाइन को क्रिएट करने में. Okay, so like I will show you if I click on this get started button. Okay, and here you will see like the documentation. It will take you to the documentation page. Here you can see the overview and installation uses of this. I just wanted to show you first like the components. Like why I have chooses material UI. Okay. One thing also like आपने bootstrap का भी नाम सुना होगा जो एक CSS लाइब्रेरी है. वो what it will do, it helps you to create the CSS, okay, with the help of the class name. Same thing the material. Like if you go let me click on this button component. Okay, so now like if you try to create this type of button, okay, so you can see this. You need to add this few line of code, and it will create your button for it, like this type of button. Like here, is under. If you click on it, like nice animation, you can also show it. Okay. So this type of button, if you want to create na achieve using CSS only, so it will like you need to write a more code. You can like these are the made with CSS only, customer CSS only, but uh, it will be more complex to you to write the code. Okay, but with the help of this material UI, you can create by very easily. Okay, yeah, I will give you this the site link in the description. Okay, so first of all, let's focus here. Okay, so let's install this library or like yeah, you can say the library only plugins for React application. Okay, so how we can do it? इसके लिए हम यहाँ पर आप साइड बार में इंस्टॉलेशन ऑप्शन को देख रहे होंगे. तो इंस्टॉलेशन मेन्यू को क्लिक करते हैं तो इट विल टेक यू द इंस्टॉलेशन पेज. ओके, and now here you will see the like how you can install the application, the steps it will show you. Like first, you can see the default installation. Run one of the following command to add material UI to your projects. Okay, so you can choose based on your like system. Like I am currently using the Node.js like npm package, so I will copy this command. Okay, so I will click here, click this button. Now go to application and how you can install it. So उसको install करने के लिए आपको अपने terminal को open करना होगा. So how you can open it with Control plus J. Okay, or you can see a terminal option here, terminal menu, and then new terminal. Okay, so like it's here in my terminal, like my application is running. So I want to terminate it for now. Okay, so to terminate your running application, you just need to press Control plus C. Okay, and now paste your like command which you have copied under material website. Okay, just hit the enter button. So what it will do? It will install the library plugins into your system. Okay, so wait until it gets installed. Sorry, actually I have some fold. So I will wait until it got installed. Uh, Based on the system and internet connection, it will take time. Like my internet connection is fine, but my system processor is very low. That's why it's taking time. But if you have a good system processor and a stable internet connection, it will be installed very fast on your system. Okay. So let's wait.
So I hope like it's clear until here. Like if you have any doubt, you can ask in the comment box. I will do try to answer your question. Okay? लेकिन ये आपको यहाँ तक सब समझ में आ रहा है तो उसके लिए भी आप एक थम्स अप दे सकते हैं और लाइक बटन को प्रेस कर सकते हैं। और यदि आप मेरे साथ इस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं तो वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं, जिससे मैं समझ पाऊँ कि आप मेरे साथ लाइक इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करें और सिर्फ देख रहे हैं इसको क्रिएट करते हुए। Whatever it, I just want to pass my time. Like it's taking too much time to getting install this type of application. Like, okay, now till then, what I will do, I will go to the material website and see what's the next step. Okay, so now if you want to use this style component, you can install it also, but I don't want to install it because I don't need this. Okay, then it's like asking the dependency, like what requirement do you have to? Okay, so for using this material UI, you need React application. Okay, which version should be 17 or higher than. Okay, and React DOM is also 17 or higher. Okay, then if you want to use the Roboto font, you can install it. Okay, I don't want it, so I will get it. And if you want to use the Google font application, sorry API, so you can copy this like CDN link and just paste on your application like HTML page. Okay, now if you want to use the icons, like यदि आप अपने application को icon को add करना चाहते हैं material UI icon, and what is this material UI icon? So like I will show you what is it. So if I click on this search button and if I search the icon, okay, so in the components you will find a material icon. So yeah, here you can see material offered like a variety of icon which you can use to your application, like free of course. Like if you want to add some this type of to go to this website site and search for icon, and if you want to add any icon, just click on this icon and it will show you the step how you can add it. Okay. Yeah, here you can see. Here's the command. You just need to copy this command and paste on your like code file. Okay, so like I will also need it. So for that I will go to installation. Okay, where is it? It's somewhere below. Yeah, here if you can see in the icon. I will copy this command book also. Okay, this command को copy करना and go to my application. And it's still getting installed, and I don't know why it's taking too much time. Okay, so now you can see it's done. Okay, so if you need to verify like whether your packages are getting installed or not, so you just need to go to your package.json file. Okay, package.json file is there, and here you can verify like you can see now I have install the material add MUI slash material add emotion slash react and add emotion slash style. This packages I have installed, and you can see in the dependency section you can see all the libraries mentioned here. So it's installed successfully. Now I want to install the icons also. So I will paste the command here and press the enter button. Sorry guys. Okay, so let's wait to install it also. And I know it will take time also. And I don't have any other choice also. I have to wait. Okay, so let's install it also. Okay, then let's close this application.
It's taking too much time, and we have to wait. Oh God, 100% of CPU got utilized, and I think this is the reason why it's taking too much time. Okay. Now you can see the Streamlab desktop. It's utilizing the 43% of my CPU uses. As for the VS Code, it 16%, 13%. What else is running? Node.js runtime, cycle requires desktop Windows Manager. Okay, and it is also such as any unwanted application are running or not. No, I think only required thing is running, but still it's taking too much time because this streaming platform is taking too much seriously. You can see it's taking like more than 40% of my CPU uses. And if I stop it, like the live stream also getting will be stopped. I can't stop it, and I can't stop this Visual Code Studio also. So let's wait. Can't do anything here. Yeah. So let's close this file. Because I don't need it. And then I can't do it anything. Like यदि मैं किसी भी एक लाइक सिस्टम को क्लोज करता हूँ तो लाइक यदि मैं स्ट्रीमलेट ओबीएस को ही इसे क्लोज करता हूँ तो मेरा स्ट्रीमिंग बंद हो जाएगा. ओके. एंड इफ आई क्लोज द वीएस कोड एडिटर देन तो सारा काम ही बंद हो जाएगा क्योंकि इस वीएस कोड एडिटर के थ्रू ही हम पैकेज को इंस्टॉल कर रहे हैं. एंड उसके अलावा तो आई थिंक आई एम नॉट यूजिंग एनीथिंग. Browser, I think it's not taking too much of CPU, so it's fine. I'm also not running my application obviously. So I have to wait. Let me open my task manager one more time.
90% of the memory got utilized. Okay, let's close the Microsoft Edge for now. Okay, so I will right click on it and in task. Right click and click on the end task button. So it will close the my Microsoft Edge. And what else I can close? Yeah, these are the three that ये तीन मैंने CPU को consume कर रहे हैं, but it's fine now. 39, 50% only. Where is the other 50%? MongoDB data server, it's load it. Okay, now I think Node.js is required. I think desktop Windows manager is also needed. Okay. I need this also. System control. Okay, I need this also. Okay. Let me refresh my system. Right click, refresh. Okay, so what I can do? So let me close my live stream. Like I will go offline for a minute, okay, for a couple of minutes, and once it's get installed, now, I will restart my stream. What do you say, guys? It's fine for you or not? Just let me know in the comment box so that I can proceed. Okay. I think I need to close the OBS okay, first. Then it will get installed. Okay. So I will go offline for a couple of minutes. Okay. And I will back soon. Okay, guys.